Thank you. संतों की बानी कुछ टाइप की उद्देश्य तुलसिया संसार में पांच रतन सार तुलसिया संसार में पांच रतन सार साध संग सतगुरु शरण दया दीन उपकार। ए परम संत सतगुरु तुलसी साहेब जी की बानी। This is the Bani of Panam Sat Sadguru Tulsi Sahib. तुलसी साहब के बारे में कम लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसे तुलसीदास यूपी में एक अच्छे महात्मा हुए जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उनको तो मशहूर है। और उन्हीं के बाद में ये तुलसी साहिब, ये पूना पेशवा परिवार में पैदा हुए थे। Little is known about Tulsi Sahib. There is more literature on Tulsi Das, who before him, Tulsi Sahib, he was from the Peshwa family. हाँ, पूना राज दरबार में ये पैदा हुए, पेशवा परिवार से आते हैं। इनका नाम श्याम राव था, इनके छोटे भाई का नाम बाजीराव था। So he came from the princely family of the Peshwas from Maharashtra, and his name was Sham Rao earlier, and his younger brother's name was Bajirao. कहते हैं कि आपको बचपन से वैराग्य था, पढ़ाई लिखाई में भी दिल नहीं लगता था, एकांत में जाके कहीं पेड़ के नीचे बैठ के उस मालिक की याद में बैठे रहते। जो पिताजी को अच्छा नहीं लगता कि ये बड़े लड़के हैं, आगे इनको राज चलाना है, बहुत समझाने की कोशिश की। Right from the beginning, Tulsi Sahib had an inclination for God Almighty, and he would always like to be sitting alone in contemplation. So he would not like reading or doing other things like a Peshwa would do.
So his father was always worried that he's the eldest son, but he is not inclined towards running the kingdom. इनको बाकी पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी और तलवारबाजी सब सिखाया, लेकिन फिर भी इनका दिल एकांत पसंद करता था और जा करके कोई चिंतन में बैठ जाते। So his father insisted and got him educated and got him to learn all the arts of warfare, of swordsmanship and horse riding, etc. But despite all of that, Tulsi Sahib always would prefer to be an introvert and to be always in the contemplation of the God Almighty. पिताजी सोचते थे अगर इनको कहीं बाहर जाने का मौका दिया तो ये भाग जाएंगे, राजमहल से बाहर निकलने के लिए इनके लिए पहरा रखा था। His father was always worried that if Tulsi Sahib leaves the palace, he will go away, and therefore a guard was kept to ensure that Tulsi Sahib did not leave the palace. तो इसीलिए 16 साल की उम्र में इनकी शादी भी कर दी कि इनका ख्याल बदलेगा, लेकिन जो लिखित होता है कुछ और ही होता है। आप शादी के बाद 3 साल बाद 19 साल में आपने पिताजी से कहा मैं शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। So when he was 16, his father got him married, thinking that he will now change his mind. But whatever is predestined will always happen. When he was of the age of 19, once he told his father that I want to go out for hunting. तो पिता ने सोचा अच्छी बात है, अगर हिंसा करेंगे, जीव को मारेंगे तो इनका ख्याल परिवर्तित होगा। So his father thought that it's good if he is going for hunting, if he kills some animal, maybe his mind will change. तो इनके पीछे 50 सैनिक भेजा, अच्छे घुड़सवार, और तुलसी, इनका नाम श्यामराव था। इन्होंने क्या किया, अच्छा घोड़ा चुना जो कि बहुत तेज हो, स्पीड में भागने वाला घोड़ा चुना, और बाकी 50 लोग सैनिक इनके पीछे इनके पिता ने भेजा कि इनका ख्याल रखना कहीं जंगल से बाहर भाग नहीं जाए। So his father sent about 40 guards with him and to accompany him in the hunting. And his father was also worried that if he should not escape from the jungle and run away. So Shamrao searched for a very strong horse who could run very fast. And he rode that horse and he went ahead and the others followed him. जब जंगल में गए 3-4 किलोमीटर अंदर, तो उस मालिक की कुछ कृपा ही ऐसी हुई कि तूफान आया, धूल और हवा एक हो गए, एक दूसरे को दिखाई नहीं देने लगे लोग, और बाकी सैनिक उधर ही चक्कर लगाते रहे और एक घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते बहुत दूर निकल गए। So when he went in the forest, it so happened that there was a kind of a dust storm, and in that one could not see each other. All the guards kept moving here and there, but Shamrao then he took his horse and he went far away from there. बाहर जा करके एक गांव के पास में उन्होंने राज से ड्रेस उतार दिया, एक पत्थर पे रख दिया सब, और घोड़े को छोड़ दिया, और खाली बनियान चड्डी के ऊपर बैराग अवस्था में वहां से निकल पड़े। So after he went at a good distance, he neared a village and he took out his royal robes and he left them. He left his horse also, and only on his banyan and inner clothes he left from there, walking. और चलते चलते धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ गए, और उन्होंने काफी लंबा समय
उत्तर भारत घूमा, महात्माओं के समागम में रहे, हिमालय का चक्कर लगाया और बाद में आप एक अच्छे महात्मा बने और आके अलीगढ़ जिला आगरा के पास हाथरस में इनका आश्रम है। So thereafter he went to the northern parts of India. He went into Uttar Pradesh and further into the Himalayas in search of godmen. And after roaming a lot of places, he finally settled at a place near Agra, Aligarh, which is called Hathras. हाथरस में आज भी तुलसी साहब जी का आश्रम मौजूद है। इनके शिष्यों में आज भी लोग वहाँ पे हैं। So that ashram of Tulsi Sahib is also there in Hathras even today, and there are followers of Tulsi Sahib there even today. जो आगरा के राधा स्वामी जिनको कहते हैं, स्वामी जी महाराज, इन्हीं के शिष्य थे। So the Swamiji Maharaj, he was the initiate of Tulsi Sahib. तो एक बड़े अच्छे पहुंचे हुए महात्मा थे। ये हमेशा कंबल ओढ़े एक बैराग्य की अवस्था में पड़े रहते थे और इनको योगी कहते थे। इन्होंने एक योगिया वाला गांव बसाया। So he would dress only with, he would just take a blanket and cover himself. And he was called Yogi. And there is a place, there is a village called Yogiya Wala village, means village of the yogi. तो ये तुलसी साहब जी की वाणी है। आप कहते हैं कि तुलसी साहब जी, इस वाणी में आप इशारा देते हैं कि 5 रतन है सार, साध संग सदगुरु शरण दया दीन उपकार। कहते हैं ये दुनिया में 5 रत्न है। अगर ये 5 रत्न जिसको मिल जाए तो उसका काम बन जाता है और ऐसे आत्माएं परमात्मा के साथ मिल जाती है। So this is the Bani of Tulsi Sahib. So in this Bani he says that there are 5 priceless jewels, and if someone gets these priceless jewels, then he is able to get salvation from here. जिसके अंदर ये गुण आ जाते हैं और ये चीजें जिनको हासिल होती हैं तो परमात्मा का मिलना कहीं दूर नहीं होता। So if someone gets these 5 priceless jewels and he procures these and he keeps these, then for him to get the manifestation of God Almighty is not difficult. तो कहते हैं साध संग सदगुरु शरण। कहते हैं कि साधुओं का समागम मिल जाए तो साधुओं के समागम से सच्चाई का पता चलता है, मानव शरीर की कीमत क्या है, परमात्मा ने ये मानव शरीर क्यों दिया है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये जानकारी होती है। So the first is the company of the masters. By going in the company of the masters, we understand the importance of this life, this human life that is given to us. We understand the true purpose that we have to achieve in this life. और जब संत मत की सोजी होती है तो हम सदगुरु के शरण में चले जाएं, जो हमें सतलोक सचखंड का ये बताते हैं, नाम देते हैं, नाम दे करके भजन सुमरन करा के हमें अंदर लेके जाते हैं। Then after understanding the path of Santmat, when we surrender to the masters, we go to the masters and we seek initiation, and the masters give us the initiation and they help us to go within. तो कहते हैं दया दीन उपकार। उसके बाद में जब हम भक्ति के रास्ते पे चलते हैं तो हमारे अंदर ये 3 गुण होना चाहिए, दया, सब पे दया और दीनता नम्रता। अहंकार खो के सबसे छोटा से छोटा बन जाना, सच्ची दीनता नम्रता अंदर प्रकट होना, और दीनता नम्रता लेके जब हम भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, नाम की कमाई करते हैं तो हमें आसान होता है। So the other 3 are what we should all develop within ourselves,
and that is to have compassion, be humble, and be have humility and humbleness, and be compassionate. जीवों पे दया और उपकार, लोगों का उपकार करना। कहते ये गुण जिसके अंदर हैं वही सच्चा साधु है। And the third is to do selfless service towards others, to help the others, all the needy people, to help them. So to have compassion, to have humility, and to be selfless in our service to the others. जैसो तैसो बात की आवे गुरु की ओट, जैसो तैसो बात की आवे गुरु की ओट, गांठ बांधे संत से ना पर के कर कोट। तो कहते हैं कि कैसे कैसे भी पापी, चाहे वो पुण्यवान हो चाहे पापी हो, जो संतों की शरण में आते हैं, अगर वो ये गुण लेकर के भक्ति में लग जाए और वहाँ ये ना सोचे कि ये संत पूरा है अधूरा है, या और संतों के बारे में कोई ये नहीं खोजना नहीं चाहिए, कमाई करना चाहिए, साधन में लग जाना चाहिए, तो कामयाबी हासिल होती है। He says that when you go to the masters, you should have faith in the master. You should not be in two minds. You should not keep searching for masters. Once you have made a master, you should have full faith in the master and do your practices very earnestly and very dedicatedly, and continue with these three virtues of compassion, humility, and selfless service. If you do that, then it is not difficult for you to go within and manifest God Almighty. इसीलिए विश्वास पक्का होना चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए, प्रेम और प्यार होना चाहिए, और प्रेम और प्यार के बगैर सच्ची भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए महात्मा कहते हैं प्रेम तो एक ही है, भावे ताहि लगाए, या तो दुनिया से जोड़ दो या तो सदगुरु के चरणों से रख दो। लेकिन महात्मा क्या कहते, भाई दोनों काम करना है, दुनियावी कारोबार करते हुए भक्ति करना है। तो हमें शंका हो सकता है ये कैसे हो सकता है। So we should have faith in the master, and we should do true devotion towards the master. We can do true devotion towards the master when we have love and affection for the master. Now there is only one love that we have, and either we focus that love towards our master, or we have that love scattered in this world outside. So when we develop that true love for the master, only then we will be able to do true devotion towards the master. But at the same time, the master say that you cannot leave this world and only do that. So you have to work and do your duties towards this world and keep your attention towards the master. क्योंकि सच्ची भक्ति तभी हो सकती है जब गुरु के चरणों से सच्चा प्रेम और प्यार हो। तो कहते हैं कि दुनिया से भी प्रेम प्यार के बगैर दुनिया का नहीं चलता है, तो हम कैसे रह सकते हैं। बात ठीक है, लेकिन हम ये सोच ले, महात्मा सत्संग में हमेशा ये बात कहते हैं कि ये काल और माया की नगरी है, सुख दुख की नगरी है, जन्म मरण की नगरी है। हाँ, और हम भी देख रहे हैं कि ये सब नाशवान है। जो आज है वो कल नहीं रहना है, जो कल है वो परसों नहीं रहना है, परिवर्तनशील संसार। तो ये सोच लेना कि दुनिया झूठी है और दुनिया से प्रेम प्यार हटा लेना, सदगुरु के चरणों से जोड़ देना और गुरु का बन के अपना ड्यूटी बजाना, सब काम करना, बाल बच्चे में रहना, नौकरी करना, बिजनेस करना, धंधा करना, गुरु का बन के, तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाता है।
So you will only be able to do true devotion when you have love and affection towards the master. But that love and affection is in the world outside. And the question arises that if we have to have love only for the master, then how do we go about everything that we do in this world? Because that also needs love and affection. So the question is right. The masters say that, and in all satsangs, the masters keep repeating this again and again. That is, you should understand that this is the world of Kal and Maya. This is not a permanent world, and nothing here is going to remain forever. Knowing this reality, understanding this reality, you should go about in your dealings in this world. And gradually, but surely, you should have your love moved out from this world and focused at the feet of the master. So you should understand yourself as belonging to the master and going about doing all your worldly activities, your work related, your family related, and all the other activities you go about as a duty belonging to the master. बहुत सारे महात्मा गृहस्थ आश्रम में हो गए। हम रोज रोज उदाहरण बताते हैं। कबीर साहब जी भी गृहस्थ आश्रम में रह के एक अच्छे महात्मा बने। रविदास भी गृहस्थ आश्रम में रहे। गुरु नानक जी गृहस्थ आश्रम में रहे। हमारे महाराज सावन सिंह महाराज भी गृहस्थ आश्रम में रहे। तो गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति नहीं हो सकती, ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए अपने अंदर परिवर्तन आना चाहिए। जैसे माया मन रमे तैसे रमे जो राम। जैसे हमारा मन दुनिया में रमा, माया का रूप हुआ है, और वैसे अगर वो गुरु रूप हो जाए, नाम रूप हो जाए, तो काम बन जाए। रहो बाल बच्चे में, आप सब काम करो, आपका मन नाम से जोड़ के रखो, गुरु के चरणों से जोड़ के रखो। ये सोचना रहना नहीं, देश बिगाना है, हमें यहाँ नहीं रहना है, ये बेगाना दूसरे का देश है भी ऐसा ही। हम देख रहे हैं हमारे कितने लोग हमारा साथ छोड़ के रोज जा रहे हैं। हम ही उनको ले जाके चिता पे लिटा के आग लगा के आते हैं। हाँ, तो कहते हैं कल हमारी भी वही बारी है। हम क्या लेके गए, वो लोग क्या लेके गए, हम क्या लेके जाएंगे। So we can see examples of so many masters. They have been living in households. It's not that in Santmat we should believe that we cannot stay in households and follow Santmat. That is a wrong belief. If you see the life of Kabir Sahib, or you see the life of Guru Nanak Sahib, even Satsang Maharaj, all of them have had households, and all of them have run their families, been in their families, and had very successful families, and done everything that uh, uh, that one would expect from a householder to do. But while doing all this, we should remember that there is no permanence in this. There is no. This is all temporary. In this life itself, we have gone to the crematorium and we have cremated so many near and dear ones, and we have seen that they have not been able to take anything with them, and we should also not believe that we will be able to take anything with us. So in our mind, the way we are scattered in all the worldly things, in the worldly thoughts, and in everything around us, the way our mind is constantly scattered in that thought, if that mind starts thinking about God Almighty and about Sadguru, about Nam, and starts focusing inwardly towards Nam, towards our Sadguru, and develop that love and affection towards him, then our work is done. So it's only a matter of moving that inwardly attention that we have outside towards our master within. Then our work will be done. लेकिन हमारा उससे उल्टा व्यवहार है। हम तो दुनिया से एकदम चिपड़े हुए हैं, एकदम सच्चा प्रेम प्यार दुनिया को बांध दिया है, और ऊपर ऊपर भक्ति करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा है ना, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता।
ऊपर ऊपर तो गुरु का गान करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन अंदर दुनिया को बसा के बैठते हैं, सच्चा प्रेम प्यार दुनिया से बांध देते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, हम जैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन जिन महात्माओं ने इससे उल्टा सपना प्रेम प्यार सदगुरु की चरणों से जोड़ा, रात दिन उनकी याद में रह के दुनियादारी की, वो दुनिया से तर गए, दुनिया में भी सुखी रहे और वो दुनिया से तर गए। आज वो सतलोक सचखंड में अपने पिता परमात्मा की गोद में पहुंच गए। But what we do is exactly the opposite. We are so badly stuck in our thoughts in this world. We are so badly stuck in our attachments and everything around us, and we don't have that love and affection for our master within. But outwardly and superficially, we show a lot of devotion. We show a lot of talk about our masters. Swamiji Maharaj also says in his Bani that uh, outwardly you show a lot of devotion to the master, but inwardly you do not bring your master within. Inwardly you are carrying this world within and everything around it. You are entangled in this world. So if we see the masters, the way they have gone about it, they have continued to be in this world, but they have inwardly developed that love and affection for the master. And inwardly, outwardly, they have both love and affection for the master, not just superficial devotion. And that way, they have been successfully living their lives as human beings, but also within they have gone to Sachkhand, and they are in the lap of God Almighty and in a state of perpetual bliss. That is only because inwardly they have been able to convert their or rather disentangle their thoughts from the world outside and focus them towards the feet of the master. महाराज लैला मजनू की कहानी बताते थे। लैला राजकन्या थी, मजनू शिल्पकार, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले का लड़का था। शिल्पकार कहते हैं जो पत्थर की मूर्तियों को गढ़ के उसका स्वरूप देते हैं देवी देवताओं का। तो वो शिल्पकार का लड़का था। मजनू गोरा था, लैला काली थी, और दोनों का स्कूल से प्रेम हो गया। तो जब इतना घनिष्ठ प्रेम हो गया कि ये राजा के कानों में, खलीफा के कानों में ये समाचार गया, तो उसको बड़ा डर हो गया कि ये कैसा, ये तो राजकुमारी है और वो हमारे नौकर का लड़का है शिल्पकार का, और ये दोनों का प्रेम कैसा। तो उसने ये लैला का स्कूल ही छुड़वा दिया, स्कूल में भेजना ही बंद कर दिया, घर पे रखता, लेकिन दोनों का प्रेम प्यार ऐसा ही रहा। तो एक दिन खलीफा लैला से पूछता है कि लैला, तू तो काली है और मजनू गोरा है, वो कैसे तुम्हारे से प्रेम करता है? तो लैला कहती है, खामोश, तुम मजनू की आंखों से मुझे देखो। तो तुम्हारी आंख अलग है, तुम मजनू की आंखों से मुझे देखो। तो बाद में खलीफा भी परेशान होके सोचते चलो दोनों की शादी कर देंगे। वो बेचारा जंगल में पड़ा है 3-4 साल से, बगैर खाना पीना नहाए, बगैर कपड़ा धोए, लैला 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 करते पड़ा है, खाना भी नहीं, कुछ नहीं, लैला लैला। तो इतना घनिष्ठ प्रेम देख के मजनू का, ये अपने खलीफा का दिल पिघल गया। बोले अच्छा ठीक है, तुम बताओ, क्योंकि एक क्या हो गया, खलीफा ने उसके ऊपर दया आके जरा अपने बाजार में डंगरा पिटवा दिया कि मजनू कोई भी दुकान से आके कुछ लेके जाए तो दे दो, और पैसा खजाने से मिलेगा, मंत्री देंगे। अब धीरे 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 नया नया मजनू तैयार होने लगे, सब बाल बढ़ा के, गंदा कपड़ा पहन के,
गली गली घूमने वाले मजनू बढ़ते गए, धीरे धीरे महीने के अंदर सैकड़ों मजनू तैयार हो गए। तो अब वहां पे खजाना खाली होने लगा, बड़े बड़े बिल, लंबे लंबे बिल आने लगे राजा के पास, क्योंकि सैकड़ों मजनू। अब कोई जाके राशन की दुकान पे गोनी गोनी राशन ही लेके जा रहा है मजनू, और कोई मिठाई, कोई ये वो, सब दुकान लूटे जा रहे हैं, पैसा इतना बड़ा बड़ा बिल आ रहा है। तो मजनू बोलता है कि लैला, तेरा मजनू एक है क्या सैकड़ों? तो लैला कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मजनू एक ही है। अच्छा तू दिखा। तो लैला ने क्या कहा, अच्छा तुमको देखना है तो देखो। तो उसने राजमहल से एक फरलांग तक ऐसे थोड़ा क्रॉस में तार लगवाया कांटे का, खाली 5 फीट रास्ता, और वो तार लगवा दिया, और बीच में क्या किया, जलता हुआ अंगार बिछा दिया बीच रास्ते पे, यहां से वहां तक 1.5 फरलांग 2 फरलांग अंगार कोयले का आग जलता रहता, और चारों तरफ से डंगरा पिटवा दिया, गलियों में, जंगलों में, जगह जगह सबके कानों में गया, जो मजनू है लैला आके बैठी है गेट पे, और आके मिल के जाए। लैला ने संदेश भिजवा दिया, डंगरा पिटवा दिया। अब लैला ने क्या किया, एक 2 फरलांग के आगे और स्टेज बनाई थी, और स्टेज जो है कि 6 फीट का स्टेज बना के ऊपर बैठी थी, और डंगरा पिटवा दिया कि मजनू से लैला मिलना चाहती है, आ जाए। अब ये नकली मजनू भाग भाग के आने लगे, चलो सामान मिला, अब लैला भी मिल रही सब भाग भाग के आते थे। तो लैला ने पहले ही 4 जवान अच्छा रखे थे गेट में, कि जो अंगार देख के, अभी एकदम गेट के पास आने तक अंगार दिखता नहीं था, ऐसा था, तो वो जो अंगार देख के पीछे भागे, उसको कमरे में बंद करो, बड़ा हॉल था उसमें बंद करो। तो ऐसा करके जो भी आवे, लैला कहाँ, देखो उधर बैठा है। तो जब वो लैला की तरफ देखे और नीचे अंगार, अब आग पे इतना दूर कैसे भाग के जाए, तो पीछे भागते थे, उनको पकड़ के अंदर डाल देते थे, बाहर तक जाने ही नहीं देते थे। तो ऐसे सैकड़ों मजनू गिरफ्तार हो गए, कैद हो गए। तो बाद में वो मजनू तो कहीं जंगल में बैठा था, फटा पुराना कपड़ा में लपेट के, तो कोई घुड़सवार जाके उनको भी बोला कि अरे लैला आके बैठी है गेट पे, सवेरे से तुम्हारे मिलने के लिए इंतजार कर रही। तो वो मजनू भी भागा भागा आया भागा भागा आया। जब गेट पे आके पूछता है लैला कहाँ है, तो देखो उधर। तो उसने लैला को देखा, आग नहीं देखा, लैला को देखा, और लैला के ऊपर उसकी दृष्टि टिकी, और आग पे भागते 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 चला गया, और लैला ने उसका दोनों हाथ पकड़ के उसको बगल में बिठा लिया। तो पिताजी से, खलीफा से कहती है कि पिताजी ये मेरे मजनू है। तो इतना सच्चा प्रेम प्यार देख के मजनू ने उन दोनों की शादी कर दी। Sanji used to tell the story of Laila and Majnun. Laila was a princess, but she was of a very dark complexion. And Majnu, he was the son of an artisan. He was the son of a sculpturer, and that sculpturer used to work in the palace. So he was in a way a servant of the king, and Majnu was his son. And both Laila and Majnu, they used to study in the same school, and both of them used to love each other very much. So they such that soon the word got to the king also, Khalifa, and Khalifa got to know that there is love between Majnu and Laila. So he discontinued the school of Laila. He stopped her from going to school. And Majnu then, in absence of Laila, he also went in the jungles, and
he started living there, and in the remembrance of Laila, and he was feeling very sad and lonely, and he he was staying alone in the jungle. So Khalifa was curious as to how this love is such, and once he came to Laila and he asked Laila, Laila, tell me, how is it that Majnu likes you so much? Because you are so dark and he is very fair. So she told him, no, no, you keep quiet. You first, if you want to really know, then you have to see me with the eyes of Majnu. Only then you will see how beautiful I am. So again, seeing their innocence and seeing the love between them, and seeing that Majnu was roaming around like this without any food and any water, and he was becoming sick outside in the jungle, Khalifa decided that he will give free food to Majnu. Whatever Majnu wants will be paid by the treasury, by the king's treasury. So he announced it. And he said that wherever he is free to purchase or take anything, and that will be paid by the king, by the treasury. Now, seeing that so many Majnus now started coming in the picture. Everyone started growing long hair, tearing their clothes, and everyone started becoming a Majnu. And they started purchasing things. So people would buy tons of rations and sweets and clothes, and that way the huge number of bills started coming to the treasury, and the treasury started getting empty. Looking at all of this and the number of Majnus that had appeared on the scene, Khalifa went to Laila, and he told Laila, tell me exactly how many Majnus do you have? So she said, no, I have only one Majnu and I can prove that. So he said, okay, do that. So she said, then now you do as I am telling you to do. And she made him announce that Laila is going to be sitting and waiting for Majnu, to meet Majnu. And she made a platform which could be seen from the entrance of the palace gate. And she made a platform of about 6 feet and sat on that. And anyone seeing from the gate could see Laila sitting on the platform. But the path to reach that platform was an angular pathway, and she made a very narrow path to go to that platform. It was only about 3 or 4 feet wide, and on both sides there were barbed wire that was put, so that once someone embarks on that path, he cannot escape. And people, when they saw Laila from the gate, they could not see that this angular path. And on that angular path, then she put hot coal, and burning coal was put on the entire path right up to the platform, which was a few which was at a distance, a few 100 meters away. Now, all the Majnus who had been enjoying the benefits of the treasury, they all felt that now we have had so much, and we are also getting Majnu, and we are also getting Laila, and we are also getting the kingdom. So why not try that? So she now kept 4 strong bodyguards, strong bouncers at the gate. And she said that if someone comes to the gate and starts walking on this path and seeing the coal, if he runs, then you catch him and you arrest that person. So that way, one by one, the Majnus started appearing at the palace. And as soon they would see Laila in the front, but as soon as they entered the gate, they would have to walk on that hot coal. So seeing that, they would return, and they were caught by those 4 bodyguards and imprisoned. So that way, a big room full of all these imprisoned people was filled up. News also got to Majnu, who was in the jungle. Someone informed him also that today you have the opportunity to meet Laila. Why don't you go? She's already announced it. And Majnu felt that's great because he had not got an opportunity to meet her. So he ran also to the palace. And when he saw Majnu,
he didn't bother about the coal, and he just ran on that path and reached Laila. So when he reached Laila, she made him sit next to him, and she told Khalifa, "This is my Majnun. So he is the true Majnun of mine." तो बाद में खलीफा ने उन दोनों का इतना सच्चा प्रेम देख के शादी कर दिया। तो कहते हैं कि ऐसा प्रेम प्यार अगर मालिक से, गुरु से हो जाए तो गुरु कहीं दूर नहीं, वो जब से नाम देता है शब्द रूप में हमारे 10वें दरवाजे में बैठा होता है, वो जरूर दरवाजा खोल दे। So she made him sit, and then she showed Khalifa, and then Khalifa got both of them married. So like that, if we have love and affection towards the master, we develop that kind of love, selfless love for the master, then he is not far away, he is within, and he will definitely shower his grace upon us. सोना काई नहीं लगे लोहा गुंद नहीं खाए सोना काई नहीं लगे लोहा गुंद नहीं खाए बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए। तो वही तुलसी साहिब जी कहते हैं कि जिस तरह से सोने को काई जंग नहीं लगता, सोना चाहे हजारों साल भी मट्टी में दबा रहे तो भी उससे जंग नहीं लगता, और लोहा को कीड़ा नहीं पकड़ते, कितना बरस भी पड़ा रहे मट्टी में। तो कहते हैं ऐसे ही भला बुरा जो गुरु भगत कबो नरक न जाए, चाहे वो गुरु का शिष्य कितना बुरा ही हो या अच्छा हो, वो कभी नरक में नहीं जाता। So Tulsi Sahib says that just like gold, it does not rust. Even if gold is there in the soil for thousands of years, it will not rust. And likewise, iron is not eaten by the insects. If that also is there for thousands of years, it will not be eaten by the insects. Like that, whether a devotee is a good devotee or a bad devotee, he will never go to hell. क्योंकि नाम जो संत देते हैं, वो जो शब्द हमारे 10वें दरवाजे में दुनकार दे रहा हो, सतलोक सचखंड से आके वहां टिका हुआ है, वो पवित्र है, निर्मल है, और नामदान के दिन वो शब्द से हमारी आत्मा को जोड़ते हैं, और फिर वही शब्द वो कभी छोड़ता नहीं। वो क्या करेगा, अगर आपने मन का कहना माना, गुरु का कहना नहीं माना, पाप किया, तो आपको जो है एक जन्म मानव शरीर में भेज के उस पाप का दंड दिलवाएगा, लेकिन वो नाम का बीज खत्म नहीं होता है। और फिर भी जो संत होते हैं वो उसको अपने शरण में लेके उसका उद्धार करते हैं, लेकिन वो कभी मृतलोक में माने नरकों में नहीं जाता है। That is because when the masters initiate us, they tie the soul with the holy sound current, which is coming from Sachkhand, Satlok, and it is resonating at the eye center. So there is a connection between that Nam and the soul. So even if the jiva, under the influence of the mind, gets away from the path and starts doing things which are forbidden by the master, the Nam will not leave that jiva, but the Nam may decide to have that jiva be given another birth so that he can pay and be redeem the karmas that he has built up in that previous life. But that jiva will never go into hell for the redemption of those karmas. It will always be taken back by Nam. तो कहते हैं इस तरह से जो नाम संतों ने घट में बीज डाल दिया वो कभी नाश नहीं होता है, और ऐसे जीव नरकों में कभी जाते नहीं, मानव शरीर के नीचे नहीं जाते। लेकिन मानव शरीर उन्हीं को मिलता है जो नाम लेके गुरु का हुक्म नहीं मानते, मन के दायरे में खाना पीना मांस मछली में खाने पीने में पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गुरु नहीं आता है, तो उनको एक जन्म मानव शरीर लेना पड़ता है। So for all the initiates who are connected with Nam, they will never have to go to hell because they are connected with
Nam, and only those initiates have to come back in this world as again as a human and not below the in no form below the human being, because they have got away from the path, not listened to the masters, and again taken to eating non-vegetarian food or drinking intoxicants or doing other things which have been forbidden by the master. So only for such people, such jivas, they have to come back in this world, but they will also be taken back by Nam. तो कहते हैं वो मानव शरीर से नीचे संत नहीं छोड़ते, जाने नहीं देते, और संतों का जीव कभी नरकों में नहीं जाता। So therefore, the masters will never let that jiva go below the form of a human, and never let that jiva go into hell. दर दर बारी साध है उनसे सब कुछ होए, दर दर बारी साध है उनसे सब कुछ होए, तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो कोई। तो वही कहते हैं कि जो साधु संत हैं वो परमात्मा के दरबारी होते हैं, परमात्मा ने उनको वो ताकत दिया होता है, जो भी उनके शरण में जाता है तो उन्हीं को शब्द से जोड़ करके भक्ति करा के वो परमात्मा के पास ले जाता है। He says that the masters, they are in the court of God Almighty, and they have been given the power by God Almighty that they can bring any jiva, make him do his devotion, and bring him back to God Almighty. कहते हैं करोड़ों जन्मों के पुण्य होवे तो मानव शरीर मिलते हैं, उस प्रभु परमात्मा की कृपा होवे तो ही संतों का समागम मिलता है। So it is said that if you have the good deeds of tens of millions of previous lives, you get the life of a human being. And if you have the grace of God Almighty, then you come in the company of the masters. कहते हैं जिनको सतगुरु मिल गया उनका लेखा निबड़ा, जिनको एक बार कामिल मुर्शिद पूरा गुरु मिल गए उनका आना जाना खत्म हो गया। And if a jiva comes in the company of the masters, then his work is done. He gets his salvation, and he gets out of this cycle of life and death. काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। तो वही आप तुलसी साहब जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह का जब तक हृदय में उसका अंदर सब वही भरे हुए हैं और उसी में उसका व्यवहार है, तो वो कितना बड़ा पंडित हो या मूर्ख हो, दोनों एक समान, दोनों एक ही समान है। So Tulsi Sahib says that in your heart, if it is filled with lust and greed and passion, and then you are no different whether it is whether you are a learned person or you are a fool. It doesn't make a difference. कहते हैं कि देखो कबीर साहब के समय में सर्वाजित करके एक पंडित हुए बनारस में, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का पठन किया था, और कैसा भी महात्मा हो वेदांती हो उसको हराने का, और आप सर्वाजित नाम रखा था अपना, तो सब लोग उसको सर्वाजित पंडित कहते थे। लेकिन उसकी माँ उनको मामूली पुराने नाम से ही बुलाती थी। तो जब 8-10 लोग में बैठे रहे और माँ पुराने नाम से बुलावे तो उनको बड़ा झटका लगता था। तो उन्होंने एक दिन माँ से पूछा कि माँ सब लोग सर्वाजित पंडित बुलाते हैं, तुम क्यों पुराने नाम से बुलाती है? 4 आदमी मेरा इज्जत जाता है। तो माँ कहती है बेटा ठीक है, तूने सबको जीता होगा
लेकिन यहीं एक जुलाहा कबीर रहते हैं, वो कपड़े बुनने का काम करते हैं। अगर तू उनको जीत के आ जा तो मैं भी तुझे सर्वजित पंडित कहूँ। तो वो कहते अरे वो जुलाहा जो कपड़ा बुनने वाला है उसको जीतना क्या भारी है, मैं अभी जाता है। तो पंडित ने क्या किया, बैल के ऊपर अपना बड़ा एक थैला रखा, दोनों तरफ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण भर दिया, एक शिष्य को बैल का रस्सी हाथ में दिया, आगे आगे पंडित पीछे पीछे बैल से भरा हुआ किताबें, क्योंकि अगर कबीर नहीं माना तो बताने के लिए प्रमाण किताब भी साथ में ले गए और पूछते जा रहे थे कबीर का घर कहाँ, कबीर का घर कहाँ। पूछते पूछते कबीर के दरवाजे पहुंच गए तो उनकी लड़की जो थी क्या कमाली खड़ी थी और उसी समय ये पंडित जी पहुंचे और जाके कहते हैं कबीर का घर यही है। तो वो कहती है कि कबीर का घर इधर कहाँ है, कबीर का घर शिखर पे जहां सिलसिली ना गैल, पैर न टिके पिपलका का पंडित ला दे बैल। तब तो पंडित को तो पूरा उनका ज्ञान लोप हो गया। कहते कबीर का घर तो 7 आकाश के ऊपर है, जहां चींटी को भी पैर रखने के लिए जगह नहीं, और आप बैल लोड करके कबीर के घर जाने के लिए आए। During Kabir Sahib's time, there was a learned person called Sarvajit. He had mastered the 4 Vedas and the 6 Shastras and the 18 Puranas. So he was very learned in all of these various scriptures. And he would like to debate with people on his knowledge of these scriptures and win in those debates. So that way they used to call him Sarbajit, which is like winner of all. And Sarbajit Pandit was better known by that name. But his mother would still call him by his old name. And whenever there was a gathering, if she addressed him by the old name, he felt very insulted because she would call him by his pet name. And that way, once he told his mother that, why do you call me by that name when the whole world is calling me and respecting me by calling me Sarvajit Pandit? Why are you calling me by that name? I feel insulted. So his mother said, see, it doesn't matter with whom you have won in your debates. I will only accept you as a person who has won in the debate if you go and win in a debate with Kabir Sahib, who is a weaver. So when she told him that, he said, that's not a big deal. I can go and win in a debate against that weaver anytime. So he decided that he will go and once and for all sort this business with his mother. And he took all his books and all the scriptures, Puranas, everything, and loaded them on an ox. And he took that to Kabir Sahib's house for getting into a debate and discussing. So when he reached, the door was opened by Kabir Sahib's daughter, Kamali. And so he asked her whether this is the house of Kabir. Then looking at him and that ox laden with all the books, she said that this is not the house of Kabir. Kabir stays above the 7 skies. And there is no place even for an ant to put her legs. And you are carrying an oxen with books and you want to go to his house. So he was very shocked when he heard that. तो बाद में अंदर गई कमाली और कबीर साहब से कहती, महाराज कोई पंडित जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो कबीर साहब आए, बड़े दीनता नम्रता से उनको नमस्कार किया और उनको पानी ला के दिया पैर धोने के लिए।
और उनको अंदर लेके गए, चटाई बिछा के बिठाया. So then Kamali went inside and told Kabir Sahib that some Pandit has come and he wants to meet you. So Kabir Sahib came and he extended his hospitality. He brought a pail of water and washed the feet of that Pandit, and then ushered him in and made him sit on a mat. तो बाद में बिठाए, पानी उनी पिलाए, क्योंकि संतों के अंदर सच्ची दीनता नम्रता होती है, और पिला के पूछते हैं कि पंडित जी आपके आने का कारण क्या है. And then he offered water, because saints are very humble. They are always humble. And after he extended all the courtesies, he asked Pandit as to the reason for his visit. तो पंडित ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं आपसे वाद विवाद करने के लिए आया, शास्त्रार्थ करने के लिए आया. तो कबीर साहब कहते हैं, पंडित जी आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं अनपढ़ जुलाहा, और अनपढ़ के साथ आप पढ़े लिखे वाद विवाद करें तो आपको शोभा देती है, लेकिन क्यों करना, वो बताओ. तो बोलते हैं मेरी माँ ने ऐसा कहा है. तो वो कौन सी बड़ी बात है, आप लिख दो, कबीर हारा सर्वजित जीता, मैं साइन कर देता हूँ, लेके जाओ. अब क्या है वाद विवाद करने से. तो बोलते अच्छा हो गया, चलो. तो उन्होंने बहुत समझ के लिखा, कबीर हारा सर्वजित जीता, और बार बार पढ़ा और साइन करवा के लेके गए, और ले जाके अपने माँ के सामने फेंक दिया कि पढ़. तो माँ कहती बेटा मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूँ, तू पढ़ के तो बता. तो जब वो पढ़ने लगता है सर्वजित पंडित, तो उल्टा हो गया, कबीर जीता और सर्वजित हारा. तब तो उसको साख लगा, ये क्या कोई मंत्र तंत्र तो नहीं करता, क्योंकि मैंने बार बार पढ़ा, वही बात है, और यहाँ आगे कैसे उल्टा हो गया. तो बाद में आप आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, तो कहते नहीं लिखने में गलती हो गई, फिर एक बार जाके आता हूँ. फिर आए, फिर कहते महाराज गलती हो गई लिखने में. तो बोला अच्छा फिर से लिख दो. तो फिर लिखा सर्वजित जीता और कबीर हारा, और अच्छा पढ़ा, 10 बार पढ़ा. फिर बाद में उसको साइन करवाया, लेके गया, और वहां जाके पढ़ने के समय फिर उल्टा हो गया. सर्वजित हारा और कबीर जीता. तो बोलता है क्या माया है, वो ये कोई जादूगर है, ये उल्टा कर दे रहा है. तो हाँ, आंख फाड़ फाड़ के देखता है कि मैंने खुद लिखा, कोई दूसरा लिखे तो गलती हो गई होगी. तो माँ कहती है बेटा ये तेरे बुद्धि के समझ के परे है, ये पढ़ना लिखना ये सब तुम्हें बहन मुक्ति नहीं देगी, तो कबीर के पास जा और उपदेश ले ले. उनका अहंकार चला गया, और आके कबीर साहब के चरणों पे गिरे और उपदेश लिया, सुर शब्द का अभ्यास करके एक अच्छे महात्मा बने. So Kabir Sahib asked him as to the reason of his visit, and then Sarvajit told him that look, I've come to discuss the Shastras, all the holy scriptures, and debate with you. So Kabir Sahib said, but you are such a learned person, you have read all of these, and I am an illiterate weaver. So what is the point of the debate? I mean, what is the real reason you want to debate with me? Because there is no point in the debate. You are fully literate, I am completely illiterate. So Sarvajit then told him that, look, the issue is like this, that my mother calls me by the old name, and she refuses to call me Sarvajit because I have not, she's asked me to win a debate with you. So then Kabir Sahib said, then what is the big deal? So you just tell her that you have won the debate. So you can, there's no need to go through all this debate and everything. You just write down what you have to write. I will sign and I will accept defeat. So Sarvajit said, okay, this is good. This is convenient. And he immediately wrote on a paper that Sarvajit has won the debate and Kabir has lost the debate.
And he read this 2-3 times, made sure everything is all proper, and then he gave Kabir Sahib to sign that letter. And Kabir Sahib willingly obliged and he signed that letter. So he proudly went back to his mother and threw that letter in front of her and said, "See, I've won the debate with Kabir." She said, "I'm illiterate. I cannot read. Why don't you only read and tell me what is written?" So he started reading. Now, when he read, it was written, "Kabir has won the debate and Sarvajit has lost the debate." So he could not believe his eyes. He again read it 5-10 times. He said, "This is not possible. Maybe Kabir has done some mantra or something and he's converted that writing, because I had read it before writing. But maybe I have made a mistake or something." So he said, "I'll just go back and come." He again went to Kabir Sahib's house and he told Kabir Sahib that, "Look, I think I made a mistake in the writing." So Kabir Sahib said, "No problem, you write again." And he wrote again. This time he read it 10 times to make sure that Sarvajit has won the debate and Kabir has lost the debate. And after reading again and again, he was sure. Then he got the signature of Kabir Sahib on it. And he went back. Now, when he went back and read it out to his mother again, the same thing happened. He had written that Sarvajit has lost and Kabir has won. So he felt that there is some Maya that is being done by Kabir. Because when I'm writing there, it's not that someone else has written the letter. I have only written it. And I have read it so many times. So this cannot happen. But so when he was doing that, then his mother said, "See, what Kabir is, he is beyond your intellect. So you will not be able to win this by your intellect. Instead, go and accept him as your master, beg at his feet, and ask him for forgiveness. You go to him." And then Sarvajit came to Kabir Sahib and he took initiation from Kabir Sahib and he became a good Mahatma. Oh, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। तो इसीलिए तुलसी साहब जी कहते हैं कि जब तक, क्योंकि निरंजन ने जब से ये आत्मा को इस शरीर में कैद किया तो अपना अंश मन साथ में रख दिया कि किसी भी तरह से ये भक्ति करके निकल के जाने नहीं पावे, और मन हमेशा ये झूठे दुनिया के चिंतन में लगा देता है और भजन सुमरन नहीं करने देता है। तो मन जो है निरंजन का अंश है और ये 5 चोर हैं जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये माया के अंश है। माया ने अपने 5 अंश रख दिए कि किसी भी तरह से ये भक्ति करके यहाँ इस हमारे देश से निकल के जाने नहीं पावे। और ये जो पांचों और छठा मन, ये जो है बहुत जबरदस्त तरीके से इसे भूल भरम में डाल के रखते हैं और गुरु का हुक्म नहीं मानने देते, उस पर चलने भी नहीं देते। When the soul came into this world, Maya cast it into different forms, and Maya set 5 of her essences with with the soul, and निरंजन Niranjan set his own essence, that is the mind. So Niranjan knew that the soul may want to go back, so he set the mind as his own essence to discourage the soul and entangle the soul in this world. So the mind is always attuned to be entangled in this world. It does not let the soul leave this world. And it is driven by the 5 essences given by Maya, which is lust, greed, attachment, ego, uh, and anger. These are the 5 essences that the soul, that Maya has put along with the mind. So these 5 vices and the mind, they do not allow the soul to get disentangled from this world.
तो वही तुलसी साहब जी कहते हैं, जब तक कि इनका गुण लोगों के अंदर प्रबल है, तब तक चाहे वो पंडित हो या मूर्ख हो, दोनों एक समान है। So the Tulsi Sahib says that till these essences are dominant in a jiva, he's whether he's a learned person or he's an ignorant or a illiterate person or a fool, it doesn't matter. All are the same when they are dominated by these five vices in the mind. और भक्ति में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। And therefore we are not able to get successful on the path of devotion. वही ले लो। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तुलसी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। राधा